Hi guys, my name is Aditya. Today I'm gonna show you my project, which is basically a mock server to help front-end developers to make a to generate a fake API which has authentication and so on. So you can select authentication from here, public access and rate limit, latency, status code. So there is XAPI key, bearer, JWT, everything like here is a path parameter, and here is query parameter and request header, response header, cookies, and also I have used faker.js for dynamic data generation uh, to feel the API to be a real life API like. Okay, so actually I have built the API. Now I will just show you how to like use this. So I have created a API already. Here you can say here users hi. So v1 v2 means version 1 version 2, and you can add also. Update means the new version will be added here. See, version 3, and whenever you click you will get the URL is this. But if I click this URL and paste in my browser, it will not gonna work. Missing or malformed authentication bearer token. This means I haven't put the cookies and authentication headers and all that. So I will just uh, actually I have made an uh, curl request previously. Here is the curl request for the this. So you can see here these values are matching like CWDW and all the values here is matching. So this is basically my command, curl command for the version 2. So I will check for the version 3. So I have made the version 3 with the same data for version 2. Okay, like, so basically whenever I click version 2, then the data of version 2 is propagating to here. You can see the changes because I have clicked it many times. If I click here, then you can see here is the value changes. So similarly for when I click this, the value changes. When I click this, the value doesn't changes because the version 2 data and the version 3 API is same. Their URL is just different by this v2 and v3. So if I click this, then it will wait for 2 minutes, like it has a latency of 2 seconds, sorry, not 2 minutes, 2 seconds. Then it will return the values. Here is the value. So here is the full name, Robin Dick now. So dynamic email also. So I have given here the faker values, this values. The full name is faker dot person full name, you can see here. But here we are getting the dynamic values. So if I click again, then I can see a different name. So there is Nathan Todd, and here is Robin Deco. So there is different names. So I'll click again and again, like the curl command, so I can check the rate limit. So I have used this for 2 times. So I will check for so by sorry, my rate limit is 4. So I can uh, get the curl command, like call the API again 2 times only. Okay, so this is the third time, this is the fourth time, and boom. Arey no yaar. And this is the fourth time. So you can see here this is the fifth time. So you can see here rate limit exceeded, reset after 10 seconds. So let's check
how many times remain. Okay, it is working, it is working, it is working again and again, again and again. Okay, again and again. So after 48 seconds, after 44 seconds, after 42 seconds, after 40 seconds, uh, for 37 seconds, and let's check it on the postman. So postman basically an uh, app application for which you can like, if you don't have front end, then you can test your API in the postman. So I'll gonna test the API in my front end. So if I paste the curl command here, then it will automatically set the cookies and authentication values and all that automatically. Don't worry about that. Okay, so it worked. Now I'll just say send, then I can see here this is the value. If I send again, then I'm getting different names and emails. So again and also again. So you can see here uh, the time, like the latency is 2.03, and we have set the latency here, 2 2000 millisecond. Means it is kind of same, but the latency is little bit of higher, 2.03. Okay, so you can see here also the rate limiting, 23 second, 20 second remain, 18 second. Okay, so this is basically a simple collaborative environment for a team to make a project who can make APIs and update their APIs version. And also you can set your API, like you can set your project to inactive. If I set the inactive, then if you click here, then you can see here the project not running, means your project is currently inactive, so it will be here. If I set active, then here if you click this, then you will get the value. If I set inactive, then this. Okay, so you can delete here, but I'm not gonna delete it because I'm gonna test other things also. So you can okay, I'll set active and reset invitation code, means this is the invitation code. So by this invitation code anyone can join. Okay, so let's make a new project. Okay, project let's say one new project. I'll copy the invitation code, paste it here with different account, join. So he will get the request here in real time, like it is using socket.io. so if I like request for joining a project, then it will be going like in current time, in real time. If I revoke this, then this approve will be removed, like it will be disappear. See, similarly for join code, again I'll click here, then approve. If I approve it, then it will be added here. Okay, this is the project. Let's add the project here from this different account. Okay, so basically I'll get the data from here, so it will be propagating the data here. Let's make it full. Okay, now I'll change my global project. So I have select the project, but the data is same here for the cd project. So I'll use this as a new project for a new API for project 1. Okay, so new API created here, update created here. Okay, so update, then this is version 3. So I'm gonna again use curl command. So where is my okay, so here curl command. Okay, so this is okay. So this is my curl. Where is the okay curl command? Where is my okay? This is fine, but I just need to
change only the project name. So this is basically cd. So my project name would be project name I have set project 1. So basically this URL is kind of made up from the base, like domain and the protocol and p always, and the version here, and also the this username and project name. Okay, and query parameters and path parameters. So if I click here, I'll select also version 3, because here you can see here for the okay, for the project 1. Okay, so for the project 1 you can see here I have actually added 3 versions, like they all are same, but I'll test for version 3. So if I click here, then it will gonna work. So it is taking 2 seconds, and here I am getting these values. So let's test it in my postman. So it is like not good looking in the command prompt. So like I will use my postman here and send. Okay, let's now delete this value. If I delete this, then it should not gonna work. Let's check. See, no mock root definition matches get 3 this. Okay, and if I change the URL to be this like 2, because version 2 is present, then this is gonna work. See, okay, and if I like you are getting it right. So here is the simple project, and what can I show you? So this is the action logs. Basically it is updated in real time by using socket.io, and this is API version. This is also updated in real time, and here is the live button in which you can understand that if it is online or offline, the backend, and here is term and condition for how the cookies and the logic is working, authentication and so on. And I think I have covered all the features. And yeah, so now I have a feature also. You can define here what, like what you can define to, you can say AI create a API with the definition and so on. If you tell the prompt here and ask API, then you can get different values. So here this will be all the values. Currently my actually API of the LLM is not working, so that's why this is returning a sample data status success, but it is not. And you can reverse your AI suggestion, means if you don't wanna use the AI suggestion, then you can reverse it, and here is the timer. So basically 2-minute timer. Within 2 minutes you can reverse the AI suggestion, the what was the previous. Okay, and that's it. So include AI response means basically this is the, if you choose this fake.string.uid and so on, this the faker .js, then if you click this, then the faker.js will return dynamic responses. So if you don't click this, then my API will just return as it is these values. Okay, so I think I have covered all the things. And yeah, basically this is light mode, yeah, you can say. And manage, you can delete from here how many requested you have sent. Let's say I'll create a new project here, let's say this project, and I'll send the request to
to the this user Adi from my user Adi is me. So let's see here, manage. This is the uh, pending request I have sent, but he like Adi didn't approve it. Okay, so now request received. Now I'll gonna create here a project, let's say anything name, and copy this code and paste it here. If I paste it here and request to join, then you can see here this is a request, this is revoke request. The request Adi is me has sent to Adi, and Adi sent to Adi is me. This is the, so this is simply a kind of cancel subscription and subscription. I haven't add actually the subscription model because I don't know how to integrate UPI. I have to learn it and then securely do the subscription part. Now it is free, but later on I will add the subscription model. I have my GitHub. You can see here respiratories. So I have actually 3 folders. Mock server, the server which is responsible for all the CRUD operations. Okay, and mock server, mock API. Sorry, I have fucked it up. Mock server basically means it store all the API definition, like the API definition user has provided to add in their projects. Okay, this is the mock server, and mock API server means it helps to operate all the CRUD operations. And you can see here inside, here is the thing, GitHub workflow and so on. There is the mock API client. So basically this is front end, and here is GitHub workflows and all that. If you wanna see the Docker here. So basically I have done this mock server. This is the internal network in which openresty is working, worker server, Redis internal. These are the basically inside the a network in mock server, and these are the projects of mine. These are the 4 projects I have created so far. So this is the 4 project. So I have here 3 project, and here is also okay. Here is 3 project, but you can see here this dot basically will only appear to the user who have created the project. So this dot is like delete project, set in active, reset invitation code, and so on. So you can see here my total user of the app is 2, and here you can see 3, and here you can see 1, means total 4 project. So 4 project, and here you can see 4 project. If you want to see the project name, then this is the project Adi is me, and cd is project name, and this is username. And also I can see here this is Adi is me. Okay, where is Adi? Where is Adi? I don't know where is Adi. Where is Adi? I think, yeah, this is the one which is this one. Okay, I think I have covered all the things. Let's log out and do my work. You can sign up from here. So you can see here name, anything, and email ID. Let's say Aditya boxy2005@gmail.com. You can see here email already present. This is valid email, and username also Adi is me. User already present. This is valid, and you can sign up and
you can log in from, I have actually logged in first, then I'll just log in from my password keys. So yeah, this was all about my project, and I know there is lot of bugs in my project, so I will try to clear up all the bugs, so to make my project a robust version, so that user will experience uh, a good user experience. uh, so now I'm gonna show you my architecture. uh, so my architecture is here. Where is it? Where is it? um, Architecture, where is it? I don't know where have I put the link of the eraser.io. I think this one. Yeah. Why it is not opening? यार तब तक ये देख लो भाई तुम लोग, क्लाइंट, सो क्लाइंट फोल्डर, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली माय फ्रंट एंड, and this is basically the three folders. openresty basically a version of nginx, in which you can use custom logics with the help of a language called Lua. You can see here the custom logics, and this is the language, this is Lua language, similar to I think Python or C language, Python. And here is the project container. So project container basically it store all the logic by which, like, you can check the rate limit, how rate limit work, and valid query parameter, and validate request body, validate authentication. All this stuff happen here. All the project, this is actually this whole project container basically represent a single project. It basically keeps on adding whenever a new project adds in the Docker network. And this is worker server basically add API to the correct project container, and it helps to create a project container with the name project hyphen the username hyphen the project name. And here is the docker compose YML file, which helps to build my network, Docker network. And I'll just you can see here, I'll just paste the command, this docker build this command, and then it will pull all the necessary Redis internal image and build my whole network and all the three folders. Okay, and this is basically a server. You can see here, nothing special here. It has all the standard folders and all the API for CRUD operations. Okay, and nothing special here. Why my eraser is not working? Eraser is not loading front end. Yeah, it loads. Why it is not loading? Unable to load document. तब तक तुम लोग मेरा प्रोफाइल ही देख लो यार.
दिस इज़ माई प्रोफाइल, दिस इज़ माई URL। तुम देख सकते हो, ये लिंक्डइन है, यूट्यूब है मेरा छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स। या दैट वाज इट। आर्किटेक्चर नहीं दिखा पा रहा हूँ तुम लोगों को यार। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर या नहीं खुल गया, वो दूसरा वाला खुल गया यार। ये एक्चुअली नहीं है मेरा आर्किटेक्चर, वो दूसरा वाला खुल गया। मुझे भी याद नहीं कहाँ पे मैंने स्टोर किया था URL। अरे फक, मैंने तो स्टोर ही नहीं किया था URL। सफारी हिस्ट्री देखना पड़ेगा यार, हिस्ट्री देखना पड़ेगा। अच्छी यार, हिस्ट्री नहीं यार, मेरा मैंने करा था यार, मैं भूल गया, फिर डिलीट हो गया मेरा। बट कोई बात नहीं, चलो लाइव बनाते हैं, ठीक है। चलो लाइव बनाते हैं, छोड़ो ऐसा। सब डिलीट करो पहले तो, इरेज एवरीथिंग। ओके, eraser.io। चलो लाइव दिखाते कैसे आर्किटेक्चर है मेरा। ट्राई इरेजर यार, लोडिंग का दिक्कत है यार, लोडिंग क्यों नहीं हो रहा। तब तक ये सब क्लियर करता हूँ, मेरा कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, सब फालतू है। ठीक है चलो। अरे यार लोड ही नहीं हो रहा मेरा। रात के 4 बजे, अभी तो नेटवर्क फास्ट चलना चाहिए, पर इनका तो सर्वर ही डाउन है। लोडिंग eraser.io यार। ओके, लिमिट रीच कर चुका हूँ मैं। चलो ये सब हटाओ यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। ये सब मैंने बनाया था वो फ्रंट एंड के लिए एक्चुअली। चलो यार बनाते हैं, छोड़ो। क्लाइंट, मेरा छोटा सा क्लाइंट, क्लाइंट ना, तो ये क्लाइंट है। अरे यार टेक्स्ट वेक्स्ट सब फक्ड अप है। कैसे बढ़ाते हैं यार टेक्स्ट। इधर से बढ़ाओ। चलो अब बनाते, देखते क्या होता है, जो भी है। चलो, दिस इज़ क्लाइंट, बेसिकली दिस इज़ माई क्लाइंट। ओके, so client, अबे यार टेक्स्ट साइज 40 सही होगा शायद। चलो ठीक है, टेक्स्ट। चलो, दिस इज़ क्लाइंट एंड इधर मैं बेसिकली nginx लगाऊंगा, nginx। सो nginx, ये क्लाइंट बेसिकली इधर से
तक जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट करेगा एंड रिस्पॉन्स मिलेगा इसको इधर से nginx से। ठीक है, nginx बेसिकली मैं लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या बोलूँ, रेट लिमिट और क्या बोलते हैं, मेरे सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए सब है जो काम है बेसिकली। सो हियर इज़ माय सर्वर, my basically the main server for the CRUD operations, all the CRUD operations। और क्या, इसमें एक काफका लगाऊंगा, काफका हेयर, बिकॉज मैं बताऊंगा, पहले ड्रॉ करने लेने दो, मेरे को ड्रॉ करने दो भाई। ड्रॉ इधर से करूंगा, इधर से जाएगा, सिस्टम डिज़ाइन सब डब्बा बनाने का काम हो चुका है भाई। अब इधर डालो, फिर से इधर डालो, इधर से इधर डालो। ये लाइन एरो पुशिंग तुम तो जानते हो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, सिमिलरली एवरीथिंग। एक mongodb बनाता हो इधर, mongodb कोई भी तुम एटलस यूज़ कर लो, आउट लाइक क्लाउड एटलस, तुम्हें खुद का कुछ डेटाबेस नहीं बनाना पड़ेगा, अच्छी बात है। तो इधर से मैं जाऊंगा, सो जो डेटा है बेसिकली सर्वर से मैं जब mongodb में डेटा कोई डालना चाहता हूँ, मतलब ऐड करना चाहता हूँ, तो काफका के थ्रू जाएंगे हम। और काफका बेसिकली क्यों होता है, जैसे थ्रूपुट, mongodb या फिर कोई भी डेटाबेस का जो थ्रूपुट होता है वो एक मैक्सिमम होता है, वो डिपेंड करता है उसका क्लस्टर कौन सा ख़रीदा है तुमने, या फिर मतलब बेसिकली कौन सा मतलब तुम्हारा रिसोर्सेस है डेटाबेस का। सो अगर डेटाबेस तुम्हारा छोटा है या फिर रिसोर्सेज बहुत कम है डेटाबेस में, लाइक सर्वर ऑफ द डेटाबेस इज़ वेरी लो कॉन्फ़िगर्ड VPS, then you can use Kafka. So in Kafka basically it like, do you know token bucket or leaky bucket algorithm? It is kind of same, but it is little bit of different. Like Kafka, whenever we are gonna add a data to the mongodb, then we will add it in the Kafka. If like lakhs of request appears in the server concurrently, then the Kafka has high throughput, means it can handle many requests. So whenever server is getting too much request, it adds all the data to Kafka. So Kafka basically act as a buffer. So Kafka take take the request and the data at any rate possible, and whenever Kafka added the data, Kafka will add the data to mongodb. It follows a linear throughput system, like 1000 operations per second, add 1000 operations per second. So this is basically that's why I am using Kafka. So here is the mongodb to server whenever my client needs server, and then this is basically my simple thing here. Now I think, and here I will use a Redis. So this is a external Redis, which is like, you can use Uptash and all that. I don't know the name properly. Uptash, I think Uptash, Redis, Uptash, I think जो भी नाम है यार, अजीब नाम है। हेयर ऐड करेंगे, रेडिस से डेटा तो चाहिए होता है, एंड पहले तो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये जो टोटल है ना, ये मेरा एक VPS में डलेगा, मतलब एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर।
में ये पूरा डलेगा, और इसका जो फोल्डर एक सिंगल फोल्डर होगा, जिसमें एक फोल्डर होगा काफ्का, एक फोल्डर होगा सर्वर, एक फोल्डर होगा nginx। ठीक है, पूरा जो गोला बना है ये एक उसमें डलेगा, क्या बोलते हैं, एक VPS में डलेगा। ठीक है, इसका एक VPS में काम चलेगा। अब ये तो आउटर है, मतलब एटलास जो क्लाउड सर्विस यूज़ करते, फ्री होता है शायद 512 MB तक। एंड दिस क्लाइंट आई विल ऐड दिस क्लाइंट ऑन, आई थिंक रेंडर, या फिर किसी में फ्री में यूज़ कर लो फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, दिस अलग, ये एक अलग है। ये तो आउटर लाइक एक्सटर्नल सर्विस है उपतश इंटरनेट पे, like cloud service like mongodb। And now I will add here a worker folder, sorry, worker server, ठीक है, वर्कर सर्वर, जिसमें उपतश से डेटा लेगा। मतलब इधर मैं बुल MQ यूज़ कर रहा हूँ, इधर बुल MQ है ये सर्वर के साथ। जो बुल MQ इसमें रेडिस में डेटा डाल रहा है, मतलब वर्क डाल रहा है कि अपडेट API, डिलीट API, क्रिएट API, क्रिएट प्रोजेक्ट, डिलीट प्रोजेक्ट, ऑल दैट। तो ये वर्कर सर्वर क्या करेगा, उधर से डेटा लेगा रेडिस से 1 by 1 लाइक क्यू, देन ये बेसिकली ऐड करेगा। पहले तो ड्राइंग कर लेता है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। प्रोजेक्ट 1, बेसिकली ये अलग अलग हर एक प्रोजेक्ट है। ये एक प्रोजेक्ट का एक डॉकर कंटेनर ऐसे रन टाइम पे ऐड हो रहा है। ठीक है, चलो 2 ही बनाता हूँ सिर्फ, प्रोजेक्ट 2। और ये क्या करेगा, ये इन लोगों से बात करेगा, मतलब डॉकर के साथ डॉकर ओड यूज़ करता है ये वर्क सर्वर। डॉकर ओड एक मॉड्यूल है बेसिकली, जिसमें तुम ये सब कर सकते हो, मतलब न्यू डॉकर ऐड कर सकते हो, न्यू डॉकर कंटेनर। तो वही काम करता है, बस इधर से डायरेक्ट इधर ऐड करेगा। अरे यार ये सब क्या हो गया है, जो भी छोड़ो, समझ गया ना। इधर से इधर तक ऐड करेगा, बहुत सारे रन टाइम पे प्रोजेक्ट, इधर डॉकर प्रोजेक्ट ऐड करेगा। एंड और क्या बाकी है, मैं तो भूल ही गया। इधर शायद मेरा nginx था, हाँ, मतलब openresty nginx का वो openresty वर्जन जो lua यूज़ करता है। lua बेसिकली एक लैंग्वेज है। openresty nginx यूजेस lua, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये भी सब हर एक प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा, एंड हर एक प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा, हर एक प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड रहेगा, हर एक प्रोजेक्ट के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहेगा। एंड ये क्या करेगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट करे अपने API बनाने के बाद, ठीक है, वो इधर पे कॉल करेगा कर्ल HTTP /# डोमेन, ऐसा ही जो भी मिलता है, मतलब जो भी है छोड़ो। तो ऐसे रिक्वेस्ट करेगा, तो वो रिक्वेस्ट सीधा इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, या इधर से, समझ रहे हो। बस ये बेसिकली एक लेयर है। इधर से प्रोजेक्ट लेगा, रीडायरेक्ट करेगा अपने स्पेसिफिक कंटेनर पे वो रिक्वेस्ट, एंड देन ये प्रोजेक्ट 1 उसका लॉजिक यूज़ करेगा जो भी है, एंड रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स nginx को। nginx फिर इधर रिटर्न कर देगा। और ये वर्कर सर्वर बस ऐड करेगा प्रोजेक्ट, डिलीट करेगा API, क्रिएट करेगा API, अपडेट करेगा API, क्रिएट डिलीट प्रोजेक्ट करेगा। मतलब डिलीट मतलब ये कंटेनर एंड सेट इनएक्टिव, मतलब प्रोजेक्ट को उस टाइम पे एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, मतलब पॉज करना है प्रोजेक्ट कि अब काम करना बंद कर दो, या डिलीट करना है, सॉरी इनएक्टिव करना है, सो ऑन। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इंटरनल रेडिस, हाँ,
एक बाकी है इंटरनल रेडिस। इंटरनल रेडिस जो कि ये पूरा जो है ना, रुक जाओ, ये पूरा इधर पूरा जो ये जो पूरा है, ये पूरा गोला बना रखा है। ये बेसिकली मैं तुम्हें दिखाता हूँ फाइल स्ट्रक्चर मेरा। ये मॉक सर्वर है, ठीक है, ये मॉक सर्वर है ये वाला पूरा। एंड ये मॉक सर्वर पे ओपन रेस्टी वाला ये पार्ट है, और प्रोजेक्ट कंटेनर वाला एक ये प्रोजेक्ट है। इसमें मल्टीपल अब रन टाइम पे होगा। और ये वर्कर सर्वर है, ठीक है। वर्कर सर्वर में ये क्या करेगा, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ कुछ डेटा है वो इधर डालेगा, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का यूआरएल, मतलब उसका ये प्रोजेक्ट का इंटरनल यूआरएल क्या है नहीं है, ये इंटरनल रेडिस पे डालेगा। और ये इंटरनल रेडिस क्या करेगा, स्टोर करेगा। और फिर जब ये जो डेटा इसमें डालेगा, मतलब जो भी ऐड एपीआई है तो वो क्या करेगा, इधर डालेगा और इधर भी डालेगा रेडिस में भी, कि बाद में अगर ये क्रैश कर जाए तो जब ये रिकवर करे ना तो इधर से डेटा ले, ठीक है। ये ऐसा ही कुछ, मतलब ये जब इनएक्टिव हो तो क्या है कि इन मेमोरी में मैं ऐड एपीआई सब डाल रहा हूँ, तो इन मेमोरी में क्या है कि ये प्रोजेक्ट अगर पॉज हुआ, कोई क्रैश हुआ एक प्रोजेक्ट, ये अगर प्रोजेक्ट मतलब डॉकर कंटेनर क्रैश हो गया, देन क्या है कि उसको फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा ऑल द प्रीवियस एपीआईज। सो वो डेटा कहाँ से मिलेगा, वो इधर से मिलेगा। अब ठीक है, ऐसे ही होता है। अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, वो ऐसे ही काम करता है। अब बस ये पूरा आर्किटेक्चर समझ गए तुम। अब मतलब नहीं समझे होंगे या तो समझ गए होंगे, छोड़ो यार। चलो देखते हैं, इधर करेगा, इधर से इधर भी जा सकता है, बस हो ऐसे ही होता है और क्या। हाँ ऐसे ही बस। अब एरो एक दो एक्स्ट्रा इधर लगाना पड़े, ऐसा समझ रहे हो, फ्लो है जो भी है। अब ये मेरा, हाँ ये अब आर्किटेक्चर है मेरा पूरा। सो ये पूरा जो है ये पूरा मॉक सर्वर है, ठीक है। उसमें तुम देख सकते हो, तुम्हें समझ आ चुका हो ये 3 फोल्डर एंड ऑल दैट। अब सर्वर जो है, सर्वर में मैंने कुछ नहीं किया। ये सर्वर में मैंने ये जो nginx दिखाया, काफका दिखाया, ये दोनों मैंने लगाए ही नहीं। सिर्फ सर्वर लगाया, जो सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है। और mongodb तो बाहर का है, मैं अभी लोकल यूज़ कर रहा हूँ, बट बाहर का तुम एटलस यूज़ कर सकते हो क्लाउड में। ये रेडिस भी मैं एक बाहर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं अभी करंटली एक्चुअली डॉकर एक यूज़ कर रहा हूँ, ये जो रेडिस है 6379 पोर्ट पे। सो ये बेसिकली ये बाहर का क्लाउड भी यूज़ कर सकते हो, एक एक्सटर्नल डॉकर, सॉरी एक्सटर्नल रेडिस विच इज़ नॉट इनसाइड द माई मॉक सर्वर। इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो इधर प्रोजेक्ट और ये मॉक सर्वर है, इससे कुछ कनेक्शन नहीं है इसका। ये जो रेडिस है ये अलग है, तुम बाहर का क्लाउड भी यूज़ कर सकते हो, अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये। और क्लाइंट दिखा देता हूँ मैं, क्लाइंट फोल्डर। क्लाइंट में कुछ नहीं, बस ये सब है बेसिक तुम्हारा वाइट रिएक्ट और फिर टेलवाइन है। और उसमें तुम्हारा ये सब जो भी ऑथेंटिकेशन है, कंपोनेंट, प्रोजेक्ट, ये सब फोल्डर है बड़े बड़े जो भी है, कॉन्टेक्स्ट है जो भी है, तुम्हारा पेजेस है, होम पेज, OTP पेज, साइनिंग, ये सब कुछ है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 फोल्डर, ये 3 चीज़ें, एक क्लाइंट, एक ये, और ये मैं एक VPS में डालूँगा, ये एक मैं VPS में डालूँगा। VPS मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो कि एक सर्वर है। सर्वर में ये पूरा जो है ये डालूँगा, ये जो है पूरा डालूँगा। और फिर ये एक्सटर्नल यूज़ करूँगा, ये एक्सटर्नल, एंड ये क्लाइंट एक एक्सटर्नल VPS में डालूँगा। बेसिकली 3 VPS। तो ऐसे ही करेंगे और बस हो गया मेरा प्रोजेक्ट रेडी। बट ये nginx बाकी है, काफका बाकी है इम्प्लीमेंट करना, ये 2 करूँगा ये सर्वर के अंदर।
एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, बस मेरा काम चलता रहेगा, और यही बस, और क्या। चलो अब गेट बैक टू माई ऐप। टर्म एंड कंडीशन अगर देखना हो तो देख लो यार, कुछ नहीं है, बस जेमिनी से लिखवा है टर्म एंड कंडीशन, मैनेज अकाउंट, चलो एक दो डिलीट कर ही देता हूँ, मन कर रहा है, चलो डिलीट कर दो, ठीक है। बहुत टाइम हो गया और मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है भाई, तो थोड़ा सहन कर लो यार। ठीक है, चलो ये सब लॉग्स सब कुछ बेसिकली बता चुका हूँ मैं, और कुछ बाकी शायद नहीं है। हाँ ठीक है, चलो।